हेलो क्लास 6। आज आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है लैंग्वेज में? द सेंटेंस। तो a group of word placed in a proper order is called a sentence. You know before. Okay, already you know that a group of words placed in a proper order is called sentence. A sentence give a complete meaning. A sentence begin with a capital letter and end with a full stop. Okay. आर अ क्वेश्चन मार्क पे भी end हो सकता है. आर एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स. इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना नेसेसरी है. द सब्जेक्ट रिफर टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट आपका पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है जो कि कोई ना कोई एक्शन करे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट. तो अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. सेंटेंस में टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ पर्सन और अ थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड. तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अक्सर या पर्सन हो या थिंग हो जिसके विषय में कुछ कहा जाए. द सब्जेक्ट कैन बी वन और मोर देन वन वर्ड. सब्जेक्ट आपका वन वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है. The predicate is the word or group of words. The predicate words का एक ऐसा ग्रुप होता है जिससे आर डिनोट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए. द predicate also contain a verb. predicate में भी आपके वर्ब होता है. Now sentence are of four kinds. Okay, those which make statements are assertions, as Humpty Dumpty sat on a wall. This is called declarative or assertive sentences. Okay. Second, those which ask questions. For example, what is your name? So this is called interrogative sentences. Those which express command, request, or entreaties, as be quiet, have mercy on me. So this is called imperative sentence. Last, those which express strong feeling. For example, how warm the day is. What is the shameful we have here? So this is called exclamatory sentences. You know, every sentence has two parts. First subject and second predicate. So when we make a sentence, we name some person or thing, and second say something about the person or thing. In other words, we must have a subject to speak about and we must say predicate something about that subject. मतलब यहाँ है कि सब्जेक्ट को कुछ कहने के लिए या करने के लिए होना चाहिए और क्या कहते हैं, जो वर्क किया जा रहा है वो उसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए. So the part which name the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence, and the part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence. Here are some examples. Suresh runs, birds fly, girls play, my brother passed the examination, it is very cold today, the dog barks at night. The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate also. यानी सब्जेक्ट क्या होता है, अक्सर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है लेकिन कभी कभी बाद में भी होता है. जैसे here comes the bus, sweet are the uses of adversity. However, in the imperative sentences, the subject is left out. लेकिन जो imperative sentence होते हैं उसमें आपके subject को छोड़ दिया जाता है. जैसे sit down. तो here the subject you is understood and thank him. Here to the subject you is understood. A group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. Okay. In the following sentence, the group of the italic are phrases there usually do not have subject or predicate. Look, honesty pays in the long run. The sun rises in the east. The prime minister
post is not a bed of rose. Show me how to do it, or it run a sunset of great beauty. Here, italic word in the long run, first sentence, second in the east, third, bed of rose, and fourth, to do it, sorry, how to do it, and great beauty. These words are phrases.